Yeah. Can you Okay, hello see again. and hear us? Yeah. Yes, I can. Okay. Yeah. Now I can share here. Hold on. Yeah. Okay, can you see my slide there? Yes. Okay. So I am not an astronaut, I'm an astronomer. And so I study the planets and I use telescopes and spacecraft to study the solar system around us. I'll tell you a little bit about what I do, which is we use computers a lot. I spend a lot of time looking at images, looking at data, talking with my colleagues, and reading and writing papers. Perfect. So हेनरी थ्रूप सर एस्ट्रोनॉट नहीं है. एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो अंतरिक्ष में जाते हैं. गुड. अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा हूं. जो आज सवाल पूछेंगे हम, इसके बाद लास्ट में एक क्विज करेंगे और जो उस क्विज में जीतेगा उसके लिए एक इनाम है. वो इनाम रखा है ना आपके पास? अच्छा सा इनाम है. ठीक है, तो ध्यान देना. ठीक है. I just briefly announced also at the end of this session there'll be a small quiz and we have an exclusive gift for the one who wins the quiz. Okay. Yeah. Great. Hari Hyundai. Yes. Yeah. So just a second, I'll complete this. Just a second, I'll complete it entirely. Yeah. So astronaut है ये ग्रहों को की खोज करते हैं. ग्रह जानते हैं ना? ग्रह. वेरी गुड. ग्रह जो होते हैं जैसे पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, चंद्रमा ग्रह नहीं है. और ये टेलीस्कोप जो दूरबीन होते हैं और ये अंतरिक्ष यान, इनकी मदद से ग्रहों की खोज करते हैं. ठीक है. और ये बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं. बहुत ज्यादा किसका उपयोग करते हैं? वेरी गुड. और बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत कुछ पढ़ते हैं. ये इनका रोज का काम है. ठीक है. I've completed the slide. You're trying to join from another account? Yeah, if you could, that way I can see the video as well. Okay. So what I've done is I've lived around the world and I have been able to use telescopes and work with people around the world. And so here I am in South Africa, where I've worked with one large telescope there. Okay, great. तो इन्होंने पूरी दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिकों और लोगों के साथ काम करा है. ये इनकी दक्षिण अफ्रीका की एक फोटो है. ठीक है. और आपको पता है खगोल शास्त्र में आपको एक जगह नहीं है कि आप केवल जयपुर से काम कर लो या केवल न्यूयॉर्क से काम कर लो. पूरी दुनिया में इधर उधर घूमना पड़ेगा, तभी आप चारों तरफ आंखें रख सकते हो. अभी ये कहां से बात कर रहे हैं? श्रीलंका से. शाबाश. I've completed the slide, but just let me introduce a little bit about you for the last community members who just arrived. This was the last interruption. I'm sorry for these repeated interruptions. आप लोग जो आए हैं ये हेनरी थ्रूप साहब हैं, जिनकी ये भी फोटो है और अभी बड़ी स्क्रीन पे भी ये थे. ये नासा के वैज्ञानिक हैं. नासा जानते हैं ना? जो नए लोग आए हैं उनसे पूछ रहा हूं, जानते हैं? अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, और बहुत अच्छी खोज और बहुत कुछ करा हुआ है. इनके यान मंगल तक, बृहस्पति तक, शनि तक, प्लूटो तक और अपने सौर मंडल के बाहर भी गए हैं. ठीक है. वॉयेजर 1 और 2 वो बाहर भी गए, वो सब नासा का करा है. तो ये वहां पे काम करते हैं और ये अपने लाइफ और एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों से शेयर करेंगे. ध्यान दीजिएगा, इसके अंत में एक क्विज होगी जिसके विजेता के लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है. ठीक है. ओके, थैंक यू. Okay. So people ask me about how I became an astronomer and how they can work for NASA. And let me tell you, I went to secondary school in the US and I took lots of math and lots of science because I thought those were the most fun. Then I went to university in the US and then I went to postgraduate school and I got an MSc and a PhD in astronomy. ग्रेट. सो ये अपनी जीवन की जो पढ़ाई करी है वो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा स्लाइड से. आ रहा है? तो इन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा?
खूब ध्यान दिया किस पे? गणित और विज्ञान में। वेरी गुड, मैथ्स एंड साइंस। बीएससी इन फिजिक्स, फिजिक्स यानी कि भौतिकी पे इन्होंने फिजिक्स करी, ठीक है। और फिर इन्होंने एमएससी एस्ट्रोनॉमी में करी, खगोल शास्त्र में मास्टर्स किया, है ना, स्पेशलाइजेशन। और फिर पीएचडी करी एस्ट्रोनॉमी में। तो ये डॉक्टर हेनरी बन गए। पहले क्या थे? हेनरी, फिर क्या बन गए? पीएचडी करके क्या बन जाते हैं? शाबाश। और यूएस में ज्यादातर एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट को एक सरकार से सपोर्ट भी मिलता है, सैलरी मिलती है, ठीक है। और जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो पढ़ाई करने के लिए और खोज करने के लिए उनको सपोर्ट मिलता है वहां पे। और बहुत सारे और दूसरे देशों से भी बच्चे हैं जो यूएस जाते हैं और ये पढ़ाई करते हैं। आप लोग कभी जाना चाहोगे? ओके, so it's completed. The last question I asked was, will you like to go to US to study astronomy? And it was a unanimous yes. Great. So Yeah. there are many, many students from India, from Sri Lanka, from many other countries who come to the US to study, or go to Europe, or go to Australia, or go to many, many other countries. India has many great universities, and so do the US and Europe and so forth. So for people who are the best in their class, or most competitive, it's something that they can do. Perfect. So अगर आप गणित और विज्ञान पे थोड़ा ध्यान दोगे और असली तरीके से उसको समझोगे तो आपके लिए भी सारी चीजें दूर नहीं है। और वहां पे यूएस में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के, कनाडा, कहीं से भी बहुत सारे लोग, बच्चे आते हैं वहां पढ़ने। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वहां पे यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी अच्छी है। देयर आर गुड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ऑल्सो, देयर आर गुड यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड। आप क्या करना चाहते हो उस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पहुंच पाते हो। ग्रेट। Okay. So I'm going to tell you a little bit about Pluto. And to talk about Pluto, I'm going to talk about our solar system and our galaxy. ग्रेट। अब ये बात करेंगे प्लूटो के बारे में। प्लूटो जानते हैं क्या है? प्लूटो ग्रह है पक्का या नहीं है? या फिर अब ड्वार्फ ग्रह के नाम से जाना जाता है, छोटा ग्रह। 4 ड्वार्फ ग्रह हैं, तो ड्वार्फ ग्रह है या बड़ा ग्रह है? छोटा। ओके, सो दे आर सेइंग प्लूटो इज अ छोटा ग्रह, दैट मींस इट्स अ लिटिल प्लैनेट। इट्स नॉट, दे आर नॉट हैप्पी विद द प्लैनेट, बट ओके। एंड Okay. पर उसको जाने के लिए हम सबसे पहले अपनी आकाश गंगा से बाहर निकल रहे हैं। तो जहां पे ये लाल चिन्ह है वहां पे अपना क्या है? सूरज है। यस, स्टार्ट। या All right. So this is a galaxy. This is a galaxy which has 100 billion stars in it. And one of these stars is the sun. And our sun is about halfway out and just a normal star in a normal galaxy, in the Milky Way galaxy. ओ, तो बच्चों अब देखो, हमारी आकाश गंगा में 1 बिलियन तारे हैं। 1 बिलियन का मतलब करोड़ में बताऊं? करोड़ में बताऊं? हजार, हजार कितना? 100 हुआ ना? 1 बिलियन 100, 100 करोड़। 100 करोड़, नहीं नहीं नहीं, 100 हुआ पक्का। 100 करोड़ तारे हैं केवल हमारी आकाशगंगा में। और उनमें से एक आम तारा है हमारा सूर्य, जिसमें ये आम ग्रह हैं। तो आप सोचो कितनी सारी चीजें हैं बाहर। समझ में आ रहा है? ग्रेट। So you have the sun, and next to the sun, you have 4 planets: Mercury, Venus, Earth, and Mars. And these 4 planets are all made out of rocks. So they're kind of like the Earth, that they're made out of rocks that you could stand on and pick up. ओके, तो सूर्य के जो सबसे पहले 4 जो ग्रह हैं उनमें सबसे पहले मरकरी है। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुध। हाँ, बुध। फिर वीनस को क्या कहते हैं? शुक्र। अर्थ को पृथ्वी। और फिर क्या है? मार्स को क्या कहते हैं? मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ऐसे ग्रह हैं जो पत्थरों के बने हैं, रॉक्स, ठीक है। इन पे आप, इनकी सतह है, इन पे आप खड़े हो सकते हो, ठीक है। ओके, So we call these the rocky planets. इनको रॉकी प्लैनेट कहा जाता है, देखिए पथरीले ग्रह।
after these, we have different planets. We have Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And these all have a huge atmosphere. So we can call them the gas giant planets because they're all made of hydrogen and helium around a smaller core. So इसके बाद जो 4 ग्रह हैं, एक तो वो सारे विशाल हैं, बहुत विशाल है, हम चिन्ह में न उनके तुलना में। और सबसे पहले उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आते हैं। और ये चारों गैस जाइंट कहलाते हैं। गैस गैस जानते हो आप क्या होता है? गैस पे मैं खड़ा हो सकता हूं, शाबाश। तो इसमें एक बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इसमें द्रव्य तो है, लेकिन बीच में हाइड्रोजन और हीलियम और उसके आसपास गैस, तो हमें पता नहीं है इनका सतह है कि नहीं है, ठीक है, पर ये गैस के बने हैं, बहुत विशाल है। ओके। And after that, we have Pluto. But Pluto isn't the end. We have thousands of other small icy bodies, just like Pluto. So they're smaller and they're colder, but they're kind of like Pluto. And we call those the icy planets. आईसी का मतलब पता है आप लोगों को? आईसी, आइस क्या होता है? बर्फ। तो बर्फीले ग्रह जो एकदम आखिरी में सूरज की रोशनी और जू से बहुत दूर, ठीक है। what is the average temperature around this region? Can you just tell me? The average temperature is about maybe negative 200 degrees Celsius. तो यहाँ पे औसत तापमान होता है 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे, माइनस, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा। और यहाँ पे ये सारे ग्रह हैं, जिनमें से एक प्लूटो भी है, और एक कई सारे ग्रह हैं जो एकदम आखिरी के ग्रह हैं, ठीक है। ओके। And the temperature gets colder because you're further away from the sun. So the sun makes all of the heat and light and energy in the solar system. So the rocky planets are really hot, the gas giants are medium, and the icy planets are the coldest. तो जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा? तापमान कम होता जाएगा। तो सबसे गर्म रॉकी प्लेनेट है, गैस जायंट है, या फिर आईसी प्लेनेट है? सबसे गर्म रॉकी प्लेनेट। और सबसे ठंडे? वेरी गुड। और जो ज्यादा ना ठंडे ना ज्यादा गर्म? शाबाश, वेरी गुड। ओके। And you can see most of the planets from Rajasthan or from anywhere on Earth. And people have been doing it for thousands of years. And this is from my flat in Bombay. And just on one morning, you could see the sun, moon, Venus, Mercury, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, all the planets one morning. It's easy to see with your naked eye. हम जब आकाश में देखते हैं तो हमें किसी भी दूरबीन के बिना सबसे पहले और सबसे ज्यादा चमकदार जो दिखते हैं वो ज्यादातर ग्रह होते हैं। और ये एक फोटो ऐसी ली है जब सारे के सारे ग्रह आकाश में दिख रहे थे। तो इस फोटो में चांद तो दिख ही रहा है, मरकरी दिख रहा है, और अर्थ दिखती है। अर्थ दिखती है रात को? अर्थ नहीं दिखती। ओके, दे कैन नॉट सी अर्थ एट नाइट। इट्स अ गुड क्वेरी। ऑलराइट। बेटा, अर्थ अपनी पृथ्वी ये रही। You can see Earth at night. एंड और मार्स, जुपिटर, सैटर्न नीचे की तरफ, पर वो भी हमें दिखते हैं औसत पे, ठीक है। यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो और ये थोड़े से देखना मुश्किल होता है, ये बहुत दूर है। यस। So Uranus, Neptune, Pluto, and the asteroids are too small and too faint, and you can't see them. या तो मैंने जैसा बताया, यूरेनस से लेके आगे वाले सब बहुत दूर है और दिखते नहीं है। ओके। So in 1905, an astronomer named Percival Lowell was looking for another planet, and he thought that there was another planet because he looked at Neptune, and he saw that Neptune was moving in a strange way, and he thought it was being pulled around by another planet. So he started to look for it. Okay. Can I also just very briefly tell them about the perturbation of the orbit so that they get to know just a little bit? So basically क्या होता है, जब ग्रह, जैसे सूरज खींचता है ना गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी को, तो वैसे ही प्लैनेट जब घूमते हैं ना गोल उसके आसपास, तो वो हल्के फुल्के अपने रास्ते में भी हिलते हैं।
तो वो हिलते क्यों हैं? तभी हिलते हैं जब वो आपस में भी एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण का बल डालते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक है 1905 में, पर्सिवल लोवेल, वो उन्होंने देखा कि नेपट्टून के पास वो थोड़ा सा हिला जैसे कि, तो उसके आसपास भी कुछ होना चाहिए जो हमें पता नहीं है, तो वो ढूंढने लग गया एक और ग्रह। ठीक है, ओके। And he used this telescope here, and he used a cool trick to search for Pluto. और उन्होंने टेलीस्कोप ये वाला यूज किया जो पिछली फोटो में था, और उन्होंने कुछ एक ट्रिक करी कि जिससे वो प्लूटो देख सके। ओके। And what he did is he took pictures of the constellations, and here you can see some stars in one of the constellations. And the stars, they rise and they set, and the constellations stay the same in the sky. तो उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिलेशन जो होते हैं आकाश में, जो पैटर्न बनाते हैं अलग अलग तारे, कोई आकार बनाते हैं ना अलग अलग, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिलेशन की फोटो ली, और तारे, मतलब जैसे सूरज अपने पूरे दिन घूमता है, पृथ्वी घूमती है ना, तो वैसे तारे भी हमें लगता है कि चल रहे हैं, जब पृथ्वी घूम रही होती है तारे भी, जो उगा होता है वो भी वापस सेट होता है ना। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिलेशन के एक हिस्से की फोटो ली। ठीक है, यस। So what he did is he took pictures of the stars, and then he came back a week later and took a picture of the same part of the sky. And anything that moved wasn't a star. In fact, anything that moved was a new planet or an asteroid or a comet, or in this case, Pluto. ओके, सो अब क्या करा उन्होंने, एक हफ्ते बाद, एक वीक के बाद वापस से आए और आकाश के उसी हिस्से की एक और तस्वीर ली। अब क्या है कि जो सितारे हैं वो तो बहुत दूर हैं, तो उनकी जो पोजीशन है, एक से दूर, एक से दूर कितना है, एक से दूर कितना है, वो बदलता नहीं है एक हफ्ते में। लेकिन कोई एक चीज थी जो बदली। अब वो बदली है जो चीज, या तो वो कोई ग्रह होगा, या कोई एस्ट्रॉइड यानी कि कोई उल्का होगी, या कॉमेट जैसा, इनमें से ही कुछ हो सकता है, क्योंकि सितारे तो बहुत दूर है, तो वो इतनी जल्दी बदलते नहीं है कि इधर से इधर आ गया कोई घूम के। ठीक है, तो वो जो घूमा था, इधर से उधर आया था जो बिंदु, वो था प्लूटो। क्या था? ग्रेट। And so you can see it right here. I'll circle it so you can see Pluto moving from here to here. देखा, देखा, you see how different, the same constellation, and then a week later something moved। उस पीछे के, मतलब अगर कोई पीछे बैकग्राउंड है और आगे कोई मक्खी भी इधर से उधर जाती है तो हमें दिखता है ना कि मक्खी हिली, तो बैकग्राउंड हुआ बाकी के सितारे, और ये प्लूटो उसके सामने से निकला। ऐसे पता लगा कि यार ये जो चीज है ये सितारा तो नहीं है। ओके, ग्रेट, नेक्स्ट। So this was in 1930, and Pluto was discovered. And all we knew about it is that it was moving very slowly. And moving slowly means it's far away. And being far away means it's very cold. So we knew it was slow, cold, far away, and small. तो ये जो प्लेनेट दिखा, इसमें ये पता लगा कि यार नवा प्लेनेट है, और जो बहुत धीरे धीरे, बहुत दूर से, सौरमंडल के दूर से, तो बहुत धीरे भी चल रहा है। पृथ्वी जो ज्यादा पास होता है ना सूरज के, वो तेज घूमता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी एक साल में चक्कर लगाती है, शनि 30 साल में लगाता है, बृहस्पति 11 साल में लगाता है, मंगल लगभग 1.5 पौने 2 साल में लगाता है। ठीक है, जो जितना दूर है उतना दूर। कैन यू टेल मी द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लूटो? So Pluto orbited every 248 years. 240। प्लूटो, सुना आपने क्या क्या अंक बोले वो? 248 साल में एक चक्कर लगाता है वो पूरे सूर्य का, इतना दूर है। वो उनको मिला, और ये 1914 का, देखो 19 मार्च 14 1930 का ये न्यूज़पेपर है, जहां आज से लगभग 97 साल पहले प्लूटो की खोज हुई थी। ठीक है, ग्रेट। And so after that, we found some of the moons of Pluto. And there's 5 moons of Pluto when we found them with large telescopes, including the Hubble Space Telescope. And they're named Charon and Nix and Hydra and Kerberos and Styx.
And I was one of the people who used the Hubble Space Telescope to find Styx for the first time and discover that moon. Wow. So देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1930 में प्लूटो मिला, 1978 पे प्लूटो और शेरन, जो प्लूटो का चंद्रमा है, जैसे अपना चंद्रमा है, ग्रहों के और भी चंद्रमा होते हैं, तो प्लूटो का चंद्रमा शेरन मिला। फिर 2006 में प्लूटो, शेरन, निक्स और हाइड्रा मिला। 11 में शेरन, निक्स, हाइड्रा और कैरबेरोस मिला। और 2012 में हबल स्पेस टेलीस्कोप, हबल एक और टेलीस्कोप है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, हबल स्पेस टेलीस्कोप से ये 5 मून मिले। और जो स्टिक्स नाम का मून है, प्लूटो का जो चांद है, वो उसकी खोज में योगदान किसने दिया? क्या नाम है इनका? हेनरी सर ने स्टिक्स की खोज में योगदान दिया हबल के द्वारा। समझ में आया? खाली होनी चाहिए इस बात पे तो। ग्रेट। ओके, so this is for your discovery of sticks, for your contribution. That's right. That's right. That's right. So if you want to study Pluto more, even with Hubble, all you can see is it's a small dot. If you want to study it more, you can build a telescope and you can make that telescope really big. Yeah. So should I translate now? Yes, that's fine. Okay. So क्या है कि पृथ्वी पे तो हम वायुमंडल के जरिए देखते हैं, तो बहुत सारी धूल, मिट्टी और वो सब भी आता है, तो बहुत अच्छे से दिख नहीं पाता उस तरीके से। लेकिन अगर आप एक टेलीस्कोप को पृथ्वी से थोड़ा वायुमंडल से ऊपर ले जाओ, तभी ये सैटेलाइट पे टेलीस्कोप लगाते हैं, और उसका जो शीशा है, मिरर, उसको बहुत बड़ा कर दो, तो आपको बिना किसी बीच की रुकावट के बहुत अच्छी दृष्टि मिल सकती है दूर दराज की चीजों की भी। ओके? Or you can do something else. Instead of building a bigger and bigger and bigger telescope, you can build a small telescope and take it to Pluto. And that's what NASA does to study the solar system. Our spacecraft is a small telescope that we move to the planet to study it. ओ, और भी अच्छा करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आप बताओ? और भी अच्छा व्यू करने के लिए सोचो, आंसर उसमें है, बताओ। और भी अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? And so this is बताओ। our spacecraft. This is the New Horizons spacecraft. And this is built and funded by NASA in the US. It's about the size of a Tata Nano. And this is a robot. It doesn't have any passengers on it. There's no people traveling on this spacecraft. And its job is to go from the Earth to Pluto, take pictures of Pluto, and then fly past Pluto, keep going, and send those pictures back to Earth over the radio. And it launched in 2006. It flew 6 billion km to Pluto, and it arrived in July 2015. वाओ। तो ये बात थोड़ा अच्छे से सुनो, और भी अच्छा करने के लिए हम टेलीस्कोप को उसके एकदम पास भेज सकते हैं रॉकेट में, ठीक है? तो 2006 में न्यू होराइजन्स जो है, ये जो सैटेलाइट है, न्यू होराइजन्स प्रोजेक्ट है। न्यू होराइजन, होराइजन का मतलब वो होता है कि नई, होराइजन का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलेंगे होराइजन को? जो आपको सीमा दिखती है पृथ्वी की, है ना? न्यू होराइजन्स, अगर आप नए पड़ाव देखना चाहते हो तो उसका नाम ऐसे रखा गया, और वो 6 बिलियन किलोमीटर, 6 बिलियन यानी कि 600 करोड़ किलोमीटर दूर गया यहां से। 2006 में निकला और 2015 जुलाई में पहुंचा प्लूटो के पास। और उसने, ये जो नासा के द्वारा फंड करी हुई गई थी, और ये एक ग्रैंड पियानो के साइज का, मतलब यहां से लेके उस टेबल जितना ही बड़ा था। और ये रोबोट है, इसमें कोई बैठ के नहीं गया, ये गया और ये प्लूटो तक गया और उसके आगे भी निकला, और इसने फोटोज ली, और ये अब आगे निकलता ही जाएगा, ये करेगा, बस आगे चलता ही जाएगा। कोई सवाल आया किसी के मन में? Yeah. So we have questions, but we can do that later. Oh, yes. Okay, fine. Okay. We'll do it afterwards. Yeah. So if you look at the parts of the spacecraft, there's 3 big parts, and it's a battery and a radio and a camera.
ओके, आप अगर इसके पार्ट्स देखोगे तो इसमें क्या क्या है? परफेक्ट, यस, गो ऑन, दे नो. Okay. And you have something, you've seen something which also has the same three parts, a battery, a camera. And so the New Horizons spacecraft is basically like a smartphone. It takes pictures with its camera, it saves them on its computer, and it sends them back over the radio. तो एक चीज है जो अपन रोज देखते हैं जिसमें भी ये सारी चीजें हैं, क्या है? वेरी गुड. तो क्या करता है? बैटरी से उसको, उसमें जीवन जीवन रहता है, कैमरा से वो फोटो लेता है, और रेडियो से वो फोटो इधर उधर भेज सकता है. अपन भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे. ओके, ग्रेट. So here's a picture of it. There's a couple of different cameras on it, a couple of different sensors, and it's all made out of metal and different instruments, different electronics, so that it can fly through space and be protected from the temperatures of space by a gold blanket. परफेक्ट. सो ये जो होराइजन्स का स्पेसक्राफ्ट है, इसमें अलग अलग तरीके के कैमरा लगे हैं. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा विजिबल आईआर. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय रेंज होती है ना, जो उसमें हम केवल विजिबल लाइट देख पाते हैं. तो ये अलग अलग कैमरा अलग अलग तरीके की लाइट दे सकते हैं. मतलब गर्मी भी देख सकता है, ठंडक भी देख सकता है. ठीक है, ऐसी ऐसी कई सारी चीजें देख सकते हैं. और दिस इज अ गोल्ड फिल्म, राइट? इट्स गोल्ड. Yes. ओके. सो जो गोल्ड की फिल्म है वो हमारे जो बहुत सारे अंतरिक्ष में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आते रहते हैं, सोलर विंड आती रहती है, मैग्नेटिक चुंबकीय स्टॉर्म आते रहते हैं हर तरफ से. वायुमंडल नहीं है पृथ्वी का जो बचा है, या पृथ्वी की चुंबकीय फील्ड नहीं है जो हमें बचा है. तो उसका बचाव रखने के लिए गोल्ड की चद्दर उसको उड़ा के भेजते हैं. ठीक है, ग्रेट. So we started the idea for New Horizons in 1990. We started building it in 2001. It took about 4 years to build it until we were ready to launch in 2006. सो देखो, 1990 में आइडिया आया और 2001 में मिशन नासा ने सेलेक्ट किया, ठीक है ऐसा करेंगे. 2002 में डिजाइन किया, 3 में कंस्ट्रक्शन, 4 में कंस्ट्रक्शन और 5 में टेस्टिंग हुई. देखो कितना लंबा चलता है ये. ठीक है, नेक्स्ट. So here's some pictures of building it when we were building it in Maryland, just outside of Washington, D.C., out of aluminum. Here's one of the instruments. Here's the technicians in the lab. They look like doctors with their baby. It seems like a clean room, right? It's a clean room, yes. Okay. Can you just walk through the slides again, just quickly only? Yes. So here we are building it out of aluminum. Yeah. ये बनाने का प्रोसेस है, देखो स्पेसक्राफ्ट बनता कैसे. हाँ. This instrument is the infrared instrument, so it measures the heat coming from space. ये वो कैमरा है जो हीट नापता है. ठीक है. This looks like the doctors with their baby. हाँ, ये क्लीन रूम है, ये बना रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं है ये, लेकिन इनको एक धूल का कण भी जाना नहीं चाहिए इसलिए वैसे काम करते हैं. And it takes a huge team to build this spacecraft. So there were और ये पूरी thousands of people who worked with it. Go ahead. और ये इतने सारे लोग मिलके बनाते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं केवल ये तो मेन टीम है, इसके अलावा भी हजारों लोग हैं जिनका योगदान रहता है. क्या पता आप में से कोई भी एक योगदान करता बन जाए या कि सारे बन जाए, क्या पता, बनेगा ही. नेक्स्ट. So there were thousands of people who worked with it. Scientists, engineers, managers, programmers, hardware technicians,
writers, journalists, educators, artists, graphic designers, program managers. It takes all sorts of people to build and fly a mission like this. Oh my God. देखो क्या बोल रहे हैं वो, केवल ये नहीं है कि वैज्ञानिक ही हैं जो इसमें हैं, जिन लोगों ने करा उनमें इन्होंने नाम लिया, टेक्नीशियंस तो हैं ही, राइटर्स हुए, जर्नलिस्ट हुए, डिजाइनर्स हुए, भाई स्केचर्स होते हैं ना कि कॉन्सेप्ट बनाना है, स्केच करना है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड से हजारों लोग एक प्रोजेक्ट में जुड़ के काम करते हैं, तभी हो पाता है इतना बड़ा स्केल का प्रोजेक्ट. यस. And we built most of the hardware in the United States, and then we took it to Florida to launch it. ओके, सो ये ज्यादातर यूएस में बने इक्विपमेंट, और फ्लोरिडा दक्षिण अमेरिका में एक स्टेट है साउथ यूएस में, वहां पे ये लेके गए लॉन्च करने के लिए. And here's the rocket where we launched it from as we were assembling it at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. और ये रॉकेट लॉन्च करने से पहले जब असेंबल हुआ केप कैनावरल फ्लोरिडा में, तो ये वहां की फोटो है, फ्लोरिडा में जहां से लॉन्च पैड, वहीं पे असेंबल होता है और वहीं से लॉन्च हो जाता है. या And this is in 2006, and so we are waiting here for the launch. वाओ. तो ये देखने के लिए लोग, पर्यटक और लोग तैयार हैं बस लॉन्च देखने के लिए, जैसे अपन ने चंद्रयान 3 का देखा था ना. वेरी गुड. And the launch was successful on January successful. 20th, 2006. 2006 जनवरी 30. गुड. And it's very exciting to watch the spacecraft as it's going from the launch pad into space. एब्सोल्युटली. ये दृश्य देखे हैं ना अपन ने अभी. वेरी गुड. ग्रेट. And here's the scientists and the educators and the artists on the mission. जब कोई अपन ने इतना मेहनत करके कोई काम इतना बड़ा विश्व से बाहर का काम करा होता है, तो ये खुशी तो बनती है. अपन भी ऐसे चिल्लाएंगे ना जब अपन लॉन्च करेंगे, है ना. वात्सल्य का रॉकेट तैयार है ऊपर. या नेक्स्ट. So I'm going to show a movie of the launch. Okay. Can you hear it? ये मूवी cannot hear it. Need to share audio, I guess. Okay. Well, I'll tell you what's happening here. Yeah. We have T minus 45 seconds. So the rocket is filled with fuel. Yeah. And it's filled with essentially kerosene and oxygen, because in space you need to bring along your own oxygen to burn. तो ये केरोसिन और ऑक्सीजन से भरा हुआ है रॉकेट, स्पेस फ्यूल में 25 सेकंड में लॉन्च होने वाला है. स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, जैसे ईंधन यहाँ पे आग लगती है ना तो इंजन चालू होता है, वहां पे आपको ऑक्सीजन डालना पड़ता है तभी वो बर्न होगा. यस. 11, 10, 9, 8, 7, 6, साथ साथ बोलो. 5, 4, 4, 3, 2, 1, गो. वेरी गुड. तालियां. So there goes our spacecraft into the sky. It's working very well. It's on a rocket called the Atlas V, and it's leaving from Florida. ये एटलस 5 नाम का रॉकेट है और ये फ्लोरिडा से निकल गया. ये 2006 में गया और एक दशक बाद, 10 साल बाद पहुंचेगा प्लूटो. कितना किलोमीटर बोला था? वेरी गुड. ग्रेट. And so we launched in 2006. And after that, it took 9 years to get to Pluto. And we only passed one thing on the way, and that is we passed Jupiter 1 year after launch in 2007. तो लॉन्च के 1 साल बाद ये कौन सा प्लेनेट इसको मिला, कौन सा ग्रह मिला, लिखा है कौन सा? नहीं. लॉन्च के 1 साल बाद
प्लूटो पे तो 10 साल गया। यहाँ पे लिखा है कि लॉन्च हुआ 2006 में, 2007 में कौन सा प्लेनेट आया, लिखा है ना कौन सा है। जुपिटर कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। वेरी गुड, नेक्स्ट। And here's a map of the solar system. So we launched from Earth, we passed Jupiter, and then we intersected Pluto in 2015. And after Pluto is the Kuiper Belt. वाओ। सो आप समझ गए, सूरज से निकला 2007 में जुपिटर आया, और प्लूटो पे, यहाँ पे जहां येलो वाला है ना, दिख रहा है येलो वाला, वहां प्लूटो है। और प्लूटो के बाद काइपर बेल्ट है, मतलब जो ये छोटे छोटे उल्काओं जैसे एस्ट्रॉइड, पथरीले पदार्थ, ठंडे एकदम आइस के, वो प्लूटो के भी आगे हैं, उसको काइपर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल ऐसा नहीं कि प्लूटो पे खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत आगे तक है। नेक्स्ट। So here's some pictures when we flew past Jupiter. Oh. This is the highest resolution picture of Jupiter ever seen. And you can see the great red spot and you can see the clouds on Jupiter. वाओ, रास्ते में ये फोटो ली उसने बृहस्पति की, और ये आज तक की सबसे स्पष्ट, सबसे क्लियर फोटो है बृहस्पति की जो आज तक किसी ने भी ली है। ये रास्ते में उसने बृहस्पति की फोटो ली, और ये ग्रेट रेड स्पॉट है ना बीच में, ये जो स्पॉट सा दिख रहा है गोला सा, ये जुपिटर पे एक तूफान है। इस तूफान पे 5-6 पृथ्वी फिट हो सकती है, इतना बड़ा है। हाउ बिग इज द ग्रेट रेड स्पॉट? इट्स Oh, great red spot is maybe 10 times the size of Earth. So 10 पृथ्वियां maybe हो सकती है। 1 lakh kilometers. Oh my God, सोचो। Great. Jupiter I hope you also are has okay, rings. not too tired. I think it's going at a slow pace. I hope that's okay because of the translation. Okay. Yeah. It's okay. Yeah. Okay. Okay. So ठीक है। here's the rings. Okay. And you can see the rings are made of dust and they have moons inside of them. And these are Jupiter's rings. They're very faint. You can't see them from Earth easily, but we can see them from New Horizons. Oh. जुपिटर की भी चूड़ियां हैं, हम शनि में देखते हैं ना चूड़ियां, लेकिन बृहस्पति की भी चूड़ियां हैं, और ये न्यू होराइजन्स ने उसकी चूड़ी की फोटो ली है ये। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में ली है ताकि अच्छे से दिख पाए। ठीक है, पर ये न्यू होराइजन्स के अपना जो स्पेस प्रोब है उससे चूड़ी ली। वेरी गुड, नेक्स्ट। We also saw Jupiter's moon called Io, and you can see Io easily in a small telescope. What we saw on Io was volcanoes going off, and you can see in this movie there's a volcano at the top, which is spewing smoke onto Io. Wow, is this a real image completely, or is it simulation? This is a real movie. Yes, a real Oh my movie. God. Yes, yes. Oh my God. आपको पता है ये पृथ्वी जैसे and this is the moon which its dark side also has some luminosity, right? Yes. Right. Okay. So give me a minute here, okay? Yeah. So जैसे आपको पता है पृथ्वी के कितने चांद हैं और बृहस्पति के कितने चांद हैं? 69 से भी ज्यादा हैं। बृहस्पति और शनि के 69 से भी ज्यादा चांद हैं, लेकिन उनमें से जो बड़े चांद हैं, आयो उनमें से एक है जिसमें बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी जानते हैं आप लोग? ज्वालामुखी जो फटते हैं ना, ये ज्वालामुखी वाला ही मून है इसका। बहुत सारे वॉल्केनोस, और ये वॉल्केनो फटती हुई असली फोटो है, ये वीडियो। ऊपर दिख रहा है आपको ज्वालामुखी फटता हुआ, और ये दूसरी तरफ यहाँ सूरज है, लेकिन यहाँ जिस तरफ सूरज नहीं भी होता वहां भी इतनी गर्मी और ज्वालामुखी होते हैं कि वहां भी रोशनी रहती है। लावा की रोशनी होती है ना, वहां भी रोशनी रहती है। ग्रेट। And then we had 6 more years, 7 or 8 more years to get to Pluto. Yeah. And during that 8 years, we spent a lot of time practicing because we only had one chance to go past Pluto and we wanted to get it right. So can you just repeat? The voice broke. Yeah. So we went after we left Jupiter, then we had to fly through space for 8 more years to get to Pluto. And we didn't pass anything else because space is very empty. We didn't pass any other planets.
traveling the 4 billion kilometers more to Pluto. तो 400 करोड़ किलोमीटर और जाना था इनको जुपिटर से प्लूटो के बीच में। आप सोचो कि बीच में बहुत सारे ग्रह हैं, उनसे उन पे फोटो क्यों नहीं ली? लेकिन अंतरिक्ष ज्यादातर क्या है, खाली है। और ऐसा नहीं कि सारे ग्रह लाइन में तैयार बैठे हैं, बस होराइजन जाओ मिठाई खा के जाओ, ठीक है। तो वो उसके बाद 400 करोड़ किलोमीटर खाली गया अगले 8 साल। उस टाइम पे बस वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, बस ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, मतलब चेक कर रहे थे, सॉफ्टवेयर चेक कर रहे थे, कंप्यूटर्स पे चेक कर रहे थे, बस ये कर रहे थे। ग्रेट। And then we started getting close to Pluto, and we started seeing images of Pluto for the first time. So here's Pluto and Charon in the first image. So ये प्लूटो के जब पास आने लग गए, तो ये पहली इमेज है प्लूटो की, और उसके चांद शेरोन की दिख रही है, छोटा वाला चांद है, और ये प्लूटो है। वेरी गुड, या। And here's another one where you can see Pluto and Charon. एक और ब्लैक एंड व्हाइट, ये प्लूटो का आंसर वाला है, ऊपर वाला। वेरी गुड, यस। And every day we got closer and the images got bigger. धीरे धीरे करके पास आते गए, पास आते गए। शेरोन देखो उसके गोल गोल घूम रहा है, चंद्रमा गोल गोल घूमता है ना उसके। वेरी गुड। और and getting bigger. Wow. And getting bigger. Wow. Getting bigger. Wow. Every day. Wow. So right now we are 1 week before getting to Pluto. अब ये एक हफ्ते पहले जो फोटो ली प्लूटो के पास पहुंचने से, वो ये थी। देखो प्लूटो इतना पास। वाओ। नेक्स्ट। और पास, और पास। More big, more big. Yeah. And then on July 14th, 2015 was our closest approach to Pluto. And the spacecraft was programmed so that it would take about 1,000 pictures of Pluto and store them all in its memory. But it wasn't sending them home at the same time because the spacecraft can only do one thing at a time. It can take pictures of Pluto and save them, and then it will send them back later. Wow. Just a cross question. I'm cheating, I know, but can the new spacecrafts do that now? It's just a matter of, it takes a long time to send back pictures because it's a long way away and it's very slow. Yeah, I know. Yeah. All right. Yeah. तो ये क्या कर रहे हैं, इसने इसका प्रोग्रामिंग ये थी कि 14 जुलाई 2015 को सबसे पास था प्लूटो के, और उसकी प्रोग्रामिंग थी 1000 फोटो लेगा प्लूटो की, लेकिन अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा, साथ ही साथ पृथ्वी पे नहीं भेजेगा, ठीक है। वो बाद में भेजेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही चीज कर सकता है वो स्पेसक्राफ्ट वहां पे। ग्रेट। So here are some of the scientists. All of the scientists were staying at the same hotel. There were about 200 people staying at this hotel. And this is the morning of the encounter with Pluto. And this is the first time that people have ever seen what the surface of Pluto looks like. Wow. 2006 में जुलाई के महीने में ये वैज्ञानिक सारे एक ही होटल में रुके हुए थे उस मिशन के, और ये पहली बार था जब उन्होंने पब्लिक में ये फोटोज भेजी प्लूटो की, और जब वो होटल से बाहर निकले अगली सुबह, तो ये उनका प्रेस तैयार थी पूछने के लिए। ग्रेट। And so here are all the scientists and engineers at our lab the morning when we were supposed to receive the first image of Pluto. Do you want to see it? या ये जब बस तैयार थे फोटो के लिए प्लूटो की। यस नाउ अब वो फोटो बताएंगे। Let's see it. So here it is, the first full resolution image of all of Pluto. And so what you can see is that it has lots of different parts to it. Some parts are light, some parts are dark, some parts have craters on it, some parts are smooth. वाओ। सो प्लूटो जैसा सोचा था वैसे उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में निकला। देखो आपको दिख रहा है ना, कुछ सफेद हैं, कुछ थोड़े से लाल हैं, कुछ व्हाइट हैं, है ना। सरफेस में बहुत कुछ है, ठीक है। ये पृथ्वी से बहुत छोटा है। यस। And also Pluto has a heart on it
because we love Pluto and Pluto loves us too. ये दिल के आकार बना हुआ है प्लूटो पे पहले से, इतनी दूर से भी प्यार भेज रहा है. चलो नेक्स्ट. So here's the science team as they are seeing Pluto for the first time. They've been working on this spacecraft for 15 years, and now they're seeing Pluto for the first time. 15 साल इस पे काम करने के बाद पहली बार ये तस्वीर इन्होंने देखी इस प्रोजेक्ट में. सोचा कैसा लगता होगा. वेरी गुड. बजानी है तो बजा लो, कोई दिक्कत नहीं. Good. And for the first day, this is the only image that we had because it takes a long time to send the images back, and the spacecraft was taking more data and not sending images back. Yeah. So it would be like 3 light hours away or more, I guess. It's about 4 light hours. 4 light hours. So वो वहां से वो फोटो भेजता भी है ना, तो 4 घंटे कम से कम चाहिए पहुंचने में, क्योंकि प्रकाश भी 4 घंटे लेता है वहां से यहाँ पहुंचने में. ठीक है. देखो हम चांद तारों की बात करें तो करोड़ों साल लेते हैं, वो बताएंगे बाद में, पर प्रकाश भी 4 घंटे में, तो फोटो भी 4 घंटे मिनिमम बाद आएगी. यस. And here's the geologists as they're exploring the surface and looking for the mountains, and the valleys, and the craters, and all the other features of the geology on Pluto. अब यहाँ जियोलॉजिस्ट आ गए. जियोलॉजिस्ट जानते हो, जो पृथ्वी के भी सतह की स्टडी करते हैं, खोज करते हैं, वो वहां की भी सतह का मुआयना कर रहे हैं कि कैसा होगा, कहाँ पहाड़ होंगे, कहाँ क्या चीज होगी. देखो इसकी बहुत सारी चीजें हो सकती है. अभी जस्ट अ वेरी स्मॉल डिटूर फॉर देयर कॉन्टेक्स्ट. अभी इलॉन मस्क जो कर रहा है ना, जानते हो इलॉन मस्क को, वो मंगल पे बहुत सारी चीजें ढूंढ रहा है. हो सकता है मंगल पे हम लोग रह भी पाए. ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं प्लेनेट पे. सोना भी मिल सकता है, आपको मैं बता रहा हूं. या नेक्स्ट. And then we were waiting to hear from the spacecraft to see that it was okay, because we needed to check that it was okay because it was taking pictures, and then it was programmed to tell us and make a phone call to us to tell us that it was okay when it was done taking pictures. ओके. तो उसके बाद देखो 4 घंटा तो एक मैसेज आने में लगता है, तो सोचो कितना दूर है. 4 घंटा एक मैसेज आने में लगता है और 4 घंटा आपका मैसेज जाने में लगता है. तो हाय बोलेगा और दूसरा हाय बोलेगा, उसमें 8 घंटे का प्रोसेस है. तो आप बस पूरे दिन बस इंतजार कर रहे हो उससे रिपोर्ट लाने के लिए. फोटो तो आ गई, अब अगला मैसेज क्या भाई, अब क्या भाई, और आपके हाथ में ऐसे कुछ है नहीं. वहां के इंस्ट्रूमेंट है, फेल हो गए तो हो गए, समझो. नेक्स्ट. And so we're waiting, and this is our mission operations manager, the woman on the telephone, and she's talking with NASA's radio station to get information about the spacecraft. ये जो महिलाएं जो दिख रही हैं यहाँ पे, हाँ, ये यान से स्पेसक्राफ्ट की ये ऑपरेशंस मैनेजर है. ऑपरेशंस मैनेजर, राइट? दैट्स व्हाट यू सेड. Yes. या और ये इंतजार कर रही है सिग्नल का कि स्टेशन बताए कि क्या सिग्नल आया कि नहीं आया, और सब लोग वेट कर रहे हैं. यस. And here it is, after we heard from the spacecraft to hear that it was okay and that it had taken all of the pictures it was supposed to, and it was working so well. समझ में आया? मतलब अब उसने मैसेज फाइनली भेज दिया कि हाँ मैं ठीक हूं और मैंने सारी की सारी फोटो ले ली है और वो मैं आपको भेज दूं. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. या. And what we found is that after 9.5 years and 6 billion kilometers, we arrived 1 minute early. Oh, the calculations were pretty wrong, huh? So 9.5 साल और 600 करोड़ किलोमीटर के बाद हम जो टाइम था अराइवल का उससे 1 मिनट पहले पहुंच गए. ठीक है. तो सोचो गणित कितनी बढ़िया हुई होगी. यस. And here's what we found on Pluto. If you look at the moon, it has craters all over it. But if you look at Pluto, it doesn't have that many craters. And craters are caused when an asteroid or comet hits the surface. Okay. So देखो हम लगातार देख सकते हैं कि एक ग्रह कैसा है अगर उस पे गड्ढे बहुत सारे हैं. चांद पे हैं बहुत सारे, उस पे मतलब उल्काएं अक्सर गिरती हैं. ठीक है.
हम सरफेस का बता सकते हैं कि वो उस पे कितने आसपास उड़ी होंगी पिछले कुछ टाइम में, तो हम उसकी उम्र भी बता सकते हैं। और मून का जो सरफेस है उस पे बहुत सारे हैं, तो हम बता सकते हैं कि वो करोड़ों साल पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन प्लूटो में बहुत कम है, तो हम बता सकते हैं कि ये जैसे कि अभी ही बना हो, विद इन द लास्ट 500,000 ईयर्स, यानी पिछले 5 लाख सालों में ही हुआ हो। ये गाड़ी की फोटो दे रखी है उन्होंने, पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी पहचान सकते हो इसमें? ग्रेट, या। So the surface looks very young and very mysterious. We thought it would be covered with craters because it's so old, but it wasn't. ओके, बहुत कम गड्ढे मिले इनको, हमने लगा था कि बहुत सारे होंगे, या। And here's the different parts of Pluto. You can tell the different sections of Pluto have different colors, and the different colors are made of different things. For instance, organic molecules, or nitrogen, or carbon dioxide, or water. सो ये जो अलग अलग रंग है ना, ये अलग अलग पदार्थों का चिन्ह है। जैसे कि सफेद में है ना, हमारे पास प्योर नाइट्रोजन आइस है। नाइट्रोजन जानते हो ना क्या है? यहाँ पे गैस है, लेकिन 200 डिग्री कम कर दो शून्य से तो गैस थोड़ी रहेगी, वो क्या बन जाएगी? गैस के बाद फिर क्या बनता है? हाँ, H2 लिक्विड बनता है, और उसके बाद क्या बनता है? सॉलिड बन जाता है ना, आइस सॉलिड होती है, वैसे नाइट्रोजन आइस। रेड में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, these are carbon based molecules, right? That's what Yes. organic means. So okay, so red में organic molecules है, जिसमें में कार्बन होता है ना, हम भी कार्बन से बने हैं वैसे, वो रेड वाली जगह है। और येलो, ब्लू और ग्रीन में मीथेन गैस है, पानी है, और दूसरी गैसों की बर्फ है। ग्रेट। And Pluto is so cold Yeah. that if you take the oxygen and the nitrogen and the methane in the room in Vatsalya that you are right now, if you take it to Pluto, it would all freeze and turn into snow and ice. वो इतना ठंडा है कि यहाँ की जो गैस हम लें, नाइट्रोजन ले लें, पानी ले, वाटर वेपर ले लें, ऑक्सीजन ले लें, वो जब जाएगी प्लूटो पे तो वो सब तुरंत क्या बन जाएगा? मैंने अभी बताया, सॉलिड बन जाएगा। वेरी गुड। And here's some of the ice also. And the ice, if you look at it, it kind of looks like a glacier, kind of like a glacier in the Himalaya. But this is ice which is made out of nitrogen, not made out of water. ओके, सो जैसे ये प्लूटो का सतह है, इस पे ये बर्फ है, ये पानी की बर्फ नहीं है। किसकी बर्फ है? लिखा है वहां पे, क्या लिखा है? प्लूटोज आइस फ्लोस नाइट्रोजन। वेरी गुड, नाइट्रोजन की आइस है। और ये हमारी ही जैसे पृथ्वी के सतह पे बर्फ और ग्लेशियर चलते हैं ना हिमालय पे, वैसे ही यहाँ पे भी ये अलग अलग पैटर्न बना रही है। ठीक है, यस। And you can see some giant mountains on it. These are almost as high as the mountains in the Himalaya, but it's on the smallest planet. ये जो पहाड़ हैं ये 4 किलोमीटर ऊंचे हैं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं प्लूटो पे। कितने? अपने मनाली जाते हैं, मनाली 2,500 किलोमीटर ऊपर है। रोहतांग जाते हैं, वो 4 किलोमीटर ऊपर है। तो रोहतांग जितने तो ये पहाड़ है यहाँ पे प्लूटो में, जबकि प्लूटो बहुत छोटा है पृथ्वी से। अगर पृथ्वी फुटबॉल है तो प्लूटो एक टेबल टेनिस की बॉल भी नहीं हुई। आई होप दैट कॉन्टेक्स्ट इज फाइन, राइट? इफ अर्थ इज अ फुटबॉल, प्लूटो इज अराउंड a table tennis ball, right? Yes, sounds right. Sounds right. Yes. Yeah. And then this is Pluto's moon named Charon, which has a giant crack going across it and a little bit of red on top. देखो, ये प्लूटो का चांद है शेरॉन। इसमें ऊपर एक लाल सा पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ पे एक क्रैक्ड सा सरफेस है। लेकिन ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये मतलब ये किससे हुआ है? डू वी नो द रीजन? Maybe the reason is just like if you cook some bread, it gets a crack. Maybe the same thing happened to Pluto, that as it gets warmer or colder,
it cracked. Or the same thing happened to Charon. ओके, तो जैसे कोई चीज ठंडी या गर्म होती है कई बार क्रैक आते हैं ना उसमें, हाँ, तो हो सकता है ग्रह के साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि उसके बीच में से क्रैक आया हो. ग्रेट. या. There are lots of different features that we started seeing and naming to try to explore, and so many different features that we saw. Here's the most beautiful picture as we're leaving Pluto. Wow. So this is also New Horizons photo, right? Yes. Yeah. तो ये जो एक और न्यू होराइजन्स की फोटो है जब वो निकलने वाला था वहां से, तो ये लंबी शैडोज की फोटो और ये माउंटेन्स अलग अलग दिख रहे हैं. या नेक्स्ट. And here we can see the landscape of Pluto, all the craters and the scratches and the valleys and the canyons, and then what looks like kind of a flat ocean made of solid frozen nitrogen. वाओ. ये सतह है अलग अलग चीजों का, नाइट्रोजन का वो ओशन अब आ गया, उससे पहले रॉकी टाइप माउंटेन्स जैसे जो दिख रहे थे, दिख रहा. या नेक्स्ट. सुपर. So after we went to Pluto, we kept going because we were going to the Kuiper Belt, and we found something to go to, a new Kuiper Belt object called Arakoth. And we found Arakoth with the Hubble Space Telescope, very tiny and further than Pluto, and we could go there with our spacecraft. ओके. तो प्लूटो के आगे भी वो यान तो चलता ही गया और खोज करता गया, तो आरोकोथ नाम का एक और ऑब्जेक्ट मिला. 2014 में तो इनको बिल्कुल पता भी नहीं था कि प्लूटो के बाद क्या जाए, लेकिन हबल ने आरोकोथ देखा 2014 में और ये आरोकोथ पे गया. डिड यू डेविएट द इंजन्स टू गो टू आरोकोथ? Yes, we had to make a small deviation of the engines, and it took 3 more years to travel to Arakoth. ओके. तो फिर आरोकोथ पे जाने वाले हैं, और ये जो बीच में दिख रहा है आरोकोथ, ये हम बहुत And दूर here's हैं our अब lab सौरमंडल as we're से. getting close to Arakoth. वाओ. And then Yeah. we got closer, and we Yeah. successfully went to Arakoth. And here's the first picture of Arakoth as we're looking at it. अब तो हम बहुत ही आगे पहुंच गए हैं, वहां पे पता नहीं क्या होगा. या तो पहली फोटो देखनी है आरोकोथ की. या नेक्स्ट फोटो दे वांट टू सी. And our images kept getting better as we downlinked the best ones. वाओ. सो ये आरोकोथ है. दिस इज आरोकोथ, राइट? Yes. Yeah, it's not gravitationally spherically bound. It's less than 100 kilometers, I guess, or 200. Very small. It's about 20 kilometers. 20 kilometers. ये केवल 20 किलोमीटर का है, और इसलिए गोल नहीं है. जो बहुत छोटे होते हैं ना, उनको गोल होने की जरूरत नहीं होती. बहुत बढ़िया. ग्रेट. नेक्स्ट. So here it is. This is the oldest thing we've ever seen in the solar system. It's 4.5 billion years old, and it's been in a freezer for that whole time. अरे बाप रे. सो ये सबसे पुरानी चीज है जो आज तक वैज्ञानिकों ने देखी है, आज तक किसी ने भी देखी है. ये 450 करोड़ साल पुराने से अनचेंज्ड है. बदलाव बिल्कुल ही नहीं हुआ है फ्रीजर में. इट्स रिलेटिवली अनचेंज्ड, राइट? Well, completely unchanged. It's just like Okay. a time machine going back in time 4.5 billion years. ओ, बिल्कुल नहीं बदला. पृथ्वी भी बहुत बदल गई, सब बदल गया. ये बिल्कुल नहीं बदला. ये फ्रीजर में बहुत बहुत दूर हमसे. How further is it from Pluto or from Earth? So Pluto was about 4 billion kilometers, and Yeah. it was 2 billion kilometers more to get to Arakoth. So 6 billion kilometers. Okay. तो 2 बिलियन किलोमीटर और 200 करोड़ किलोमीटर और दूर गया अर्कोथ से, सॉरी प्लूटो से. या नेक्स्ट. So New Horizons will continue to fly through the solar system. Eventually, it will leave the Kuiper Belt
and then leave the solar system and go to another star. But the batteries and the fuel will be depleted before that happens. But we still will probably fly for another 10 years or at least until the spacecraft stops functioning. Okay. So this was the question actually. What will happen if it just flies endlessly? And we have the answer within the presentation. So अब आपने पूछा था ना, किसने पूछा था? उत्तम ने या किसने पूछा था? या सो धीरे धीरे करके, हाँ आपने पूछा था, ये चलता जाएगा लेकिन बैटरी और फ्यूल 2035 तक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये चलता ही जाता तो सन 50,000 में सौर मंडल से बाहर निकलता और सन 5 लाख में ये सबसे करीबी सितारे के पास पहुंचता, अगर इसकी बैटरी और फ्यूल अनगिनत होती। लेकिन वैसे बैटरी और फ्यूल इसकी 2035 में खत्म हो जाएगी। या So this is our team. Yeah. Thank you so much. And I hope that you will continue to follow our mission as we go outward in the solar system. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. And I would be happy to take any questions that you have. Can you hear that? I can't hear the clapping, but I can hear you. But I can see the clapping. Yeah. So it's great. It's great. Right. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Just a second. Yeah. Just a second. Yeah. So this was such a wonderful session. Thank you so much for this, Henry sir. Thank you so much for taking out the time. And I think I would not need to just provide an immediate feedback you got from the kids and the community members. So words, they spoke more than words. Now we are going straight into the question answer round. And we have a mobile mic, which has a very long wire, which can reach anywhere in the room. I'm going to switch back to the other camera, and we are in for questions. And I would like to encourage the children to ask anything they want, even if it's the stupidest or the dumbest thing you can imagine. It's fine, right? Of course. I hope that's so. आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, चाहे वो कितना भी बेवकूफी वाला सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, ये मौका है आपके पास नासा के वैज्ञानिक से कुछ भी सवाल पूछने का। ओके, एंड डोंट वरी, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द टाइम एंड द क्लॉक। ऑलराइट, Thank you. हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। जो सवाल नहीं पूछेगा उसको तो गिफ्ट मिलेगा भी नहीं। जस्ट ये तो आदर्श को आगे लो। आदर्श आप कैमरे के पास, कैमरे के आगे, आदर्श कैमरे के पास बैठ जाएगा वो। जो सवाल पूछेगा वो कैमरे के पास आके बैठेगा, ठीक है? आदर्श की शक्ल लिखिए, वेरी गुड। जो भी आपको पूछना है हिंदी में पूछ लो, आराम से ट्रांसलेट में कर दो। जो मीटर के पास जो यान जा रहा है वो कभी नहीं रुकेगा, तो वहाँ उसके पास जो कैमरा लगा हुआ है उसको सिग्नल कहाँ से मिलेगी? इसके पास, प्लूटो के पास जो उसके पास जो कैमरा लगा है, सिग्नल कहाँ से मिलेगी? उसको सिग्नल कहाँ से मिलेगा अगर वो कभी नहीं रुकेगा? So the question is, what will happen to the cameras of the system if it goes on flying endlessly? Where will it be able to send signal? How long will it be able to send signal for? How long will it be able to get to know the data? Yes. So with the cameras, space is very empty. So there's not very much to see. We haven't found another planet or Kuiper belt object to fly past. Instead, what we'll be able to do is do things like measure the solar wind and measure the particles, measure the dust particles in space.
and we'll be able to study a lot of space, even if not the planets. तो देखो स्पेस बहुत एम्प्टी है और वहां पे कुछ नहीं पता कि कुछ भी मिलेगा या नहीं, तो हम स्पेस को स्टडी कर लेंगे उस कैमरा से. But his question also was, what will happen to the instrument, and will the signals die out after some time? Yes. So the cameras will be fine. The signal will get slower and slower as it's further and further away. And eventually the battery will lose power and we will run out of fuel. And so these will probably cause the end of the mission. But maybe in 10 years, we don't know exactly. बैटरी खत्म होगी तो फिर वो कैमरा का सिग्नल भी खत्म हो जाएगा, और वैसे भी जब दूर जाता है तो सिग्नल की जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कम होती जाती है, क्योंकि फिर वो बहुत बड़े एरिया में सिग्नल पहुंच रहा होता है, उसको छोटा सा चुन्नी वर्षा हिस्सा पृथ्वी पे पहुंचेगा तो बहुत फेंट सिग्नल होगा, डिटेक्ट करना भी दिक्कत होती है. तो लेकिन जब बैटरी इसकी चली जाएगी तब खत्म हो जाएगा. ग्रेट. मोर क्वेश्चंस. अभी तक तो एक ही विजेता आया, मतलब सवाल क्विज इसी से जीतेंगे, कोई और कोई क्विज में आएगा ही. आप पूछो, अरे फटाक. और वात्सल्य के बाहर वाले भी प्लीज पूछे, कुछ भी पूछे. जब आपको बता रहा हूँ ये आजमाने का मौका है. पूछे. सबसे पहले रॉकेट को कौन से देश ने छोड़ा था? Which country launched the first rocket into space? The first rocket was by someone named. Well, there's lots of rockets that have been launched. The first modern rocket was by a scientist named Goddard from the United States, Robert Goddard. Goddard. Robert Goddard नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका से भेजा. And I guess this was 1940 or where? Again? Yeah, maybe 19. It's in the early 20th century. I don't know exactly when. ठीक है. यूएस. नेक्स्ट. हाँ आ जाओ, फटाक से आओ, टाइम नहीं है, जल्दी. यस नंदिनी. बैठ ठीक है. भैया उन्होंने कौन सी सन में क्या लॉन्च करी थी? एयरप्लेन जो लॉन्च करी थी ना, कौन सी वाली? वो अभी आपने वीडियो में दिखाया था. 2006 में करी थी. It's okay. I've answered this one. Yeah, I've answered this one. Because asking this is launch year 2006. सूरज. या और बाहर की कम्युनिटी से कोई नहीं? देखो क्विज में आप जीत के नहीं ले पाओगे फिर कुछ भी. हाँ वेरी गुड. आओ को आने देते हैं. आ जाओ फटाक से. अब हाँ आप ले लो. वैज्ञानिक बनने के लिए इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की? So what was your first research as a scientist, and what promoted you to do that research? When I was after I finished university, my first research was about the rings of Saturn, and that was the first astronomy that I did. And I thought that was really neat to understand where Saturn's rings came from and how they were made. सबसे पहले इनकी खोज शनि की चूड़ियों के बारे में, सैटर्न की जो रिंग है ना, शनि की चूड़ियों, उनके बारे में थी. और उनका इंटरेस्ट भी उसमें था कि वो आई कैसे, यार इकलौता ग्रह जिसमें चूड़ियां हैं तो कैसे, क्यों, उसके बारे में. ग्रेट. इससे संबंधित भी कोई सवाल अगर पूछ सकते हैं, मेरे दिमाग में तो आ रहा है. पूछो. बाहर का कोई भी नहीं. उत्तम फटाक जाओ. चलो. we have 6 minutes more. 6 minutes. 6 मिनट ही और है. उन्होंने सबसे पहले कौन से खोज की क्या? बताया ना उन्होंने, शनि. यही सवाल. ओके सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे. और कोई? हाँ बोलो सूरज. पेट में इतना लंबा सफर तय करते हैं 600 करोड़, जब बीच में उल्का आते हैं तो इनसे टकराते नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन. सो he's saying although space is empty, but 600 billion kilometers is a huge space to cover with a zero probability of the spacecraft being struck by an asteroid or another object.
How do you make sure that doesn't happen? Mostly space is empty. There's not very many asteroids that will hit the spacecraft, and that's because most of the small dust particles have already gone away in the solar system. They've already hit Jupiter, or they've hit Saturn, or they've hit the Earth. And so there's probably some very, very tiny dust particles that will hit the spacecraft, but nothing very big. The US and India and other countries have sent hundreds of spacecraft, and none of them have been destroyed by an asteroid or meteor. Very good. So, बहुत सारे देशों ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, आज तक किसी से कोई भिड़ा नहीं. स्पेस बहुत खाली, अंतरिक्ष बहुत खाली है. हालांकि ऐसा नहीं कि कभी नहीं हो सकता, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं. I think that was a very good question. Good. यूट्यूब पर वो गया था, उस पे गोल्ड की प्रति को चढ़ाई गई थी. He wants to learn more about the gold plating, on the spacecraft. What does it protect the spacecraft from? Yes, so the thermal blanket of gold, it does two things. It protects the spacecraft from heat and cold, and it also protects it from dust impacts for like small meteors. Wow. तो देखो, छोटी छोटी चीजों से बचाना जो जरूरी होता है. तो जो मैंने रेडिएशन बताया था वो तो है ही, पर छोटे छोटे पार्टिकल से भी उसको बचा देते हैं गोल्ड. I think the question was why gold? Oh, why gold? Because you can make gold into a very thin layer, and it lasts a long time, and it's very reflective. They have a doubt in mind, isn't it expensive? It's a very, very thin layer, and so it's only a couple of atoms thick, and so it's not the gold is not very expensive part of it. No. How much would it weigh? I'll just provide them with the context. Maybe it's 1 gram of gold, 2 grams of gold for the whole spacecraft. Oh my God. Okay, बच्चों सुनो, ये जो परत होती है ना सोने की, यही ऐसा मेटल है जो इतना थिन हो सकता है, इतना पतला हो सकता है, लेकिन फिर भी चद्दर फटेगी नहीं उसकी. ये 2-3 एटम ही थिक होता है, इतना पतला. वो पूरे स्पेसक्राफ्ट, जो मैंने पियानो का साइज स्पेसक्राफ्ट बताया, वो पूरे स्पेसक्राफ्ट में 1 ग्राम गोल्ड था बस. उतना महंगा भी नहीं है, आप समझ रहे हो? Great. Yeah, next. Any other question? We are just going to take last 2 questions. आखिरी के 2 क्वेश्चन. Yeah. Okay. Yeah. रॉकेट का आविष्कार कहाँ हुआ था? रॉकेट का आविष्कार कहाँ हुआ था? Who invented the first rocket and where? Do you know? I think that Robert Goddard is given credit for inventing the first modern rocket. There were many people who invented different kinds of rockets before then, like people have used fireworks or crackers for a long time, thousands of years before then. So Robert Goddard, जिनका नाम लिया था, सबसे पहले स्पेस में भेजा था ना रॉकेट, उन्होंने आई थिंक वही है सर को, एज फार एज नॉलेज गोज, ही इज द पर्सन जिसने रॉकेट बनाया. पर उससे पहले फायर क्रैकर्स, पटाखे और वो सब तो होते ही थे. तो रॉकेट का आइडिया था दिमाग. ओके, लास्ट क्वेश्चन. पहले कौन कौन पूछना चाहता है, हाथ खड़े करो. ओके, सो we can take only 2 more questions is fine. Henry sir? That's fine. Yeah. 2 questions only. आप आ जाओ. बच्चों, आप जो भी क्वेश्चन है ना, आप मेरे को, वात्सल्य वाले जो बच्चे हैं वो मेरे को बताते हैं ना, मैं मेल पे पूछता हूँ. So the Vatsalya children, I am telling them that they can ask me and I can mail you some questions more if they have for them. Of course. All right? Of course. Yeah. मेरा क्वेश्चन उसके लिए नहीं है, ब्लैक होल्स के लिए. ब्लैक होल्स के लिए जैसे कुछ साल पहले था कि ब्लैक होल्स के लिए सिर्फ
कब कल्पना ही कर सकते थे, ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं कि उनकी विपरीत प्रॉपर्टी वाली व्हाइट होल्स हो सकते हैं, तो इनको क्या लगता है कि व्हाइट होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं? Wow. So the question is around black holes and their existence. And a couple of decades ago, we didn't know much about black holes. Now we know a lot. Now we are speculating about white holes. And do you know something about white holes, and do they exist, and what are they basically? So it's So black holes and white holes are essentially the same thing. Both of them are very, very dense, where gravity is so strong that almost nothing can get out. With white holes, they're a little bit smaller, and so some things can get out, but not as much. तो असल में व्हाइट होल और ब्लैक होल वही चीज है, वही बहुत उतना ही डेंस चीज है, लेकिन व्हाइट होल उससे थोड़ा सा कम शक्तिशाली है, तभी प्रकाश उसमें से थोड़ा निकल पा रहा है, वो व्हाइट दिख रहा है ना, थोड़ा सा कम शक्तिशाली। तो व्हाइट होल्स एग्जिस्ट तो करते हैं। सेम क्वेश्चन। ये मतलब जो भी व्हाइट होल्स और ब्लैक होल्स हैं, इनका उपयोग अपन दूसरी गैलेक्सीज में जाने के लिए कर सकते हैं? मैंने पढ़ा है। So now it's a science fiction question. Can we somehow use them to propel us to different galaxies? Maybe. In theory, yes. Mathematically, the answer is yes, but we don't know whether that actually works or not. Maybe it works, maybe it doesn't work. I don't know. गणित के हिसाब से तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता। ठीक है, गुड क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ लास्ट। सबसे पहले जो था कि माइक के पास, प्लेनेट के बारे में किसने जाना, किसने खोजा? ठीक है, कौन से प्लेनेट के बारे में Okay. Okay, so I think he's asking about Plato and long back, saying who was the person who first noticed that there are planets, then planets even exist from the point of view of Earth, because we don't get to know such things like right before us. So who's the first person who noticed that what existed? Planets? That there are planets other than Earth. There are other celestial planets. Well, I think for thousands of years, people noticed by looking up at the sky that they could see bright lights moving across the sky. And so it wasn't one person, it was probably thousands of people for thousands of years saw the moon and the sun, Jupiter and Saturn and Venus moving through the sky. तो बहुत सदियों से, करोड़ों हजारों सालों से लोग देख तो रहे थे कि ये तारे जैसे तो नहीं लग रहे, है ना, ये झपकते भी नहीं है और ये रोज जाते हैं, तो आशंका तो थी कि ये तारे नहीं है, ये प्लैनेट ही है ना। तो एक इंसान का नाम देना मुश्किल है, ठीक है, कई है। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर द सेशन। एक और बार जोरदार तालियां। Thank you so much. Thank you. Yeah, so you can see me right now. Okay. Before we turn off the call, I'd just like to introduce you to our founder and CEO, who also happens to be my father, and today is his birthday. So, well, happy birthday to you. Thank you very much. It was so, exciting to hear your session, and I really appreciate each and every aspect of it. It was very exciting, and I think it was a lot of children are here, and we are sitting in a remote area. You can't even imagine that from where to where it is being transmitted. And thank you. I'm so grateful. I think with your launching this particular, observatory, I think this has become a very, very special for Vatsalya. Thank you very much, Dr. Henry Throop. Thank you. Thank you so much. It's such a pleasure to be here, and thank you for, the school is amazing, the kids are amazing, and the questions are fantastic. So thank you everyone.
Thank you. No, already questions अच्छे से. Very good. Okay. So we're just going to close the session. After this, we have a 5-minute break, and then I'm going to just show them around in Space Engine a little bit. You know Space Engine, right? Space Engine, the software. And then it's gone dark, but not too dark. That's why after 15 minutes, we're going to go upstairs to our observatory, and we're going to take out the 16-inch dog and some smaller reflectors. We're going to see beautiful moon. We're going to see Saturn. And if for those staying back for later, Jupiter rises at around 9. We'll see that too. So we're going to do the astronomy session after this. We'll share the photos and everything with you. Thank you so much, Henry sir. It's just so wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye.